Good afternoon, everyone. I think most of us are working from home, but today is Friday and today is also Ramadan ka first Friday. I am not sure if this holds any importance, but anyways, something good to talk about, isn't it? मुंबई, महाराष्ट्र सब जगह लॉकडाउन फिर से लग चुका है. So what we have to keep doing is keep going and make sure that whatever time you have at hand, जैसे मैं मेरे सारे क्लाइंट्स को कहती हूँ कि ये टाइम वापस नहीं मिलेगा आप लोगों को, isn't it? ये वाला टाइम ऐसा है ना कि you can think about yourself, you can work for yourself, you can also think कि नहीं भाई हमें अपनी हेल्थ पे फोकस करना है. आई नो काफी सारे लोग काफी इन्फेक्शंस बढ़ चुके हैं एंड काफी सारे लोग काफी टेंशन में भी है इस बात को लेकर के इट इज नॉट व्हाट इट वाज द लास्ट टाइम. इनफैक्ट द सेकेंड वेव इन इंडिया इज प्रूविंग टू बी अ लिटिल मोर डेंजरस देन द फर्स्ट वन, है ना. But if I have to, I think we have enough people now and I think I should introduce myself. My name is Khyati Rupani. I am the chief nutritionist at balancenutrition.in, something that we formed in 2014. So we have online programs, इसीलिए the team of Balance Nutrition के लिए कोई नई बात नहीं है. We are working out of our computers, we are working out of our system. हमारी IT ने बहुत अच्छी system बना रखी है and we are still at present talking to 1500 clients every single day. ये वीडियो मैंने इसीलिए भी करा है आज because I think that more than talking about immunity, more than talking about protection, काफी लोगों के घर में कोविड आ चुका है तो there is no reason to panic. हर कोई डिजीज के लिए हर एक इलाज होता है and a big इलाज is also what we do at home. So what I was going to do today is I was going to make sure that I give you certain recipes and I also give you one diet mantra that is going to take you through if there is somebody who is COVID positive. तो आज का टॉपिक है हमारा डाइट फॉर कोविड पॉजिटिव एंड आफ्टर दैट आई विल टॉक अबाउट अगर कोविड अभी तक टचवुड नहीं हुआ है तो हाउ डू यू मेक श्योर दैट यू आर नॉट द वन हु इज इन्फेक्टेड. इज दिस टॉपिक गुड गाइज? इफ दिस टॉपिक इज गुड देन आई कैन स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट. इनफैक्ट काफी सारे सोशल मीडिया टीममेट्स बोलते रहते हैं मुझे कि मैम आपका वीडियो क्वालिटी थोड़ा अच्छा कर दो, ये कर दो. बट आई थिंक दैट ऑन अ लाइटर नोट मैसेज अगर जा रहा है आप लोगों को तो नथिंग मोर देन दैट, राइट. सो इफ आई कैन टॉक अबाउट डाइट टुडे, ओके, अगर आप कोविड पॉजिटिव हो, ओके, तो आपको क्या करना चाहिए एंड क्या खाना चाहिए इज द entire topic for today's live. Okay, let me start by introducing one concept. Okay, आपको वो याद करने के लिए easy रहेगा. I was thinking how to put it across to you, but I think the best way to put it across to you is by making you remember it in alphabetical order. आपको ये याद रखना है कि एक अगर कोविड पॉजिटिव सिम्टोमैटिक हो या एसिम्टोमैटिक हो उन्हें हमें WPC डाइट देनी है. Okay, what is a WPC diet? For all those who don't know what a WPC diet is, any guesses? WPC diet. Well, W stands for water, which means hydration is extremely important. Okay, अगर आपके घर में कोई भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट है तो the first thing you should do is you make sure that that patient or that person is having at least not 2 liters, not 3 liters, but 4 liters of water. Okay, ये वाला water उनको जैसे ठीक लगे पीने दो. It can be warm, it can be room temperature, it can also be slightly refrigerated because if they are having a symptom of fever, something cold, okay, will give them some respite. पानी में अगर आपको थोड़ा सा उसे इम्यून बूस्टिंग करना है यू विल एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लाइम. सम पेशेंट्स लूज द सेंस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल, सो यू मेक श्योर दैट अगर आप लाइम भी डालो
तो वो पेशेंट को अगर समझ आ रही है इट्स ओके, बट अदरवाइज अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लाइम विल ऑलवेज हेल्प. काफी सारे लोग काफी सारा इम्प्लीमेंट करते हैं हमारे मसाले खाना. ओके, सो जो मसाले खाना है विच मीन्स हमारा दालचीनी, दे ऑल्सो से यू शुड टेक अजवाइन, दे से, बट गिवन द करंट सिचुएशन इट इज सो हॉट दैट पानी में अगर आप इलायची खोल के डाल दो, इफ यू एड अ लिटिल बिट ऑफ इलायची इट विल ऑल्सो एड डाइजेशन. Okay, most of the symptoms are also where people are not able to drink more water, are throwing up sometimes, are not able to consume too much food, and the water, okay, if it has a few elaichi pods, उसे थोड़ा खोल के, there's no need to crush it and all, खोल के बस इसके अंदर डाल दो and let the patient keep drinking that particular water. Okay, so when it comes to COVID, it is the WPC diet. W stands for water hydration. What will water do? Water will ensure that the system is functioning properly. हर एक चीज, हमारे hormones are liquid, हमारा blood liquid, हमारे digestive enzymes liquid, the mouth, the first opening, it starts with saliva liquid, your eyes also water, isn't it? So liquids in the form of water and hydration are the first thing we should ensure is happening. Okay, so W stands for water. Make sure आप कोई भी किस्म का पानी उसको दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर इसके अंदर आपको इलायची डालनी है आप इलायची डालिए, इसके अंदर अगर आपको एक स्टिक दालचीनी डालना है डालिए, इसके अंदर अगर आपको पुदीना डालना है यू कैन पुट दैट ऑल्सो. You can also put a little bit of kothmeer, okay, which is called dhania, hara dhania in this, because kothmeer will have a little bit of iron. Chop करके थोड़ा सा कोथमीर इसके अंदर डाल दिया, थोड़ा लाइम डाल दिया. So iron and vitamin C rich water is also something that is going to help your COVID patients. Okay, 4 liters of water in a day. Chai, coffee separate. Okay, I am not saying you include soups also, will be separate. So WPC is what we are going to follow. In P, okay, what does P mean? I think आप लोगों को पता है. P stands for nothing but protein. Every single cell of your body is protein. Your skin is made out of a protein. Your hair is made out of a protein. Collagen is a protein. Okay, your muscles are protein. Every single organ is made out of प्रोटीन. जी हाँ भारती, yes. So P stands for protein. प्रोटीन ऐसे देनी है हमें कि वो खा सके. Okay, you are not going to be able to give पनीर टिक्का or if the appetite is not great, घर में नॉर्मल पनीर की भुर्जी बना दी, whatever the patient is liking, एक पनीर सैंडविच बना दी where you are putting paneer but keep it easy on the masalas. Make sure that there is some element of taste, there is some element of edibility that comes in this sandwich. Okay, एक चीज है जो I am sure a COVID patient may like, and that is a nice sprout bhel. Okay, बहुत अच्छे sprouts हमको अगर घर में करने घर में करिए, बाहर से लाने बाहर से लाइए. एक थोड़ा स्टीम कर दीजिए उसे हल्दी और नमक के साथ, ताकि जस्ट इन केस डाइजेशन इतना अच्छा नहीं है और अगर कुछ रॉ हम खा नहीं पा रहे हैं एज पेशेंट्स ऑफ कोविड, दैट प्रॉब्लम इज रिजॉल्व. सो आई हैड लिटिल हल्दी. पानी बहुत कम डालना, बिकॉज स्प्राउट्स का अगर पानी फेंक दिया तो विटामिन सी गया. विटामिन सी इज समथिंग दैट वी ऑल आर राइट नाउ इन ग्रेट नीड ऑफ, बिकॉज विटामिन सी विल हेल्प यू विथ इम्यूनिटी. सो व्हेन इट कम्स टू योर स्प्राउट्स, थोड़ा सा पानी डालिए, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी, उसको थोड़ा स्टीम कर दीजिए. जैसे ही ठंडा हो जाए यू एड योर चॉइस ऑफ वेजिटेबल्स. इफ यू आर अ जैन यू कैन ईट काकड़ी एंड टमाटर फॉर नाउ. इफ यू आर अ नॉन जैन एड अनियंस, एड पुदीना, एड सेलरी, एड चॉप्ड anything that comes in your hand. अगर आपके घर में थोड़ा सा वाटरमेलन है वो डाल दिया, आपके घर में अगर थोड़े पीनट्स है वो डाल दिए, इंक्रीजिंग द प्रोटीन कंटेंट. उसमें अगर आप थोड़ा नींबू डाल दो, आप उनको थोड़ी डेट्स की चटनी जैसे हमारी खजूर चटनी, ओके, वो डाल दिया, देन इट इज गोइंग टू बिकम अ वेरी नाइस स्टफी टेस्टी स्नैक और अ मील फॉर देम. अगर उनको आपको दही वड़ा स्टाइल खिलानी है
तो आप उनको दही वड़ा स्टाइल भी खिला सकते हो. सो ऑल यू हैव टू डू इज टेक सम स्प्राउट्स, यू एड योर चॉइस ऑफ वेजिटेबल्स टू इट. Add dates ka chutney to it because dates are rich in iron, are rich in carbohydrates, and they will get energy also. Sprouts will give them the required protein, and that is how this will improve their entire, recovery. Okay, so when it comes to adding dahi to sprouts also, I would say please go ahead and do it and give them a sprout dahi chaat. ओके, नाउ व्हेन इट कम्स टू समथिंग गरम, अगर उनको बुखार है, अगर उनको ठंड लग रही है, अगर आपको थोड़ा सा गरम कुछ देना है उनको, देन यू कैन स्टार्ट गिविंग देम अ सूप मेड आउट ऑफ पनीर एंड स्प्राउट्स. ओके, नथिंग डूइंग. जो स्प्राउट्स आपको हल्दी और नमक में बॉईल करने हैं, उसमें आप डाल दीजिए थोड़ा सा पानी. ओके, यू एड पनीर टू इट, यू एड योर चॉइस ऑफ मसालास टू इट, cover it with good dhania. Make sure a little bit of nimbu is added and give this patient even that. Sprouts can be added in the form of sprouts khichdi also. Okay, so make sure that he or she who is suffering from COVID is eating at least one serving of sprouts, which is one katori of sprouts in a day in whatever form and format. If they are non-vegetarians, chicken soup should be added in the diet. Eggs in the form of omelets, eggs in the form of boiled eggs, eggs in the form of whatever they are into can be had. अगर overweight और cholesterol है तो egg yolk थोड़ा avoid करना. Egg whites are a good example. Please go ahead and give them that. When it comes to protein, I cannot not talk about turmeric milk. Okay, I understand it is very hot. तो टर्मरिक मिल्क कभी कभी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन प्लीज 1 कप टर्मरिक मिल्क दिन में आपको उनके लिए डालना ही है. मेक श्योर दैट इट हैज अ पिंच ऑफ सिनेमन पाउडर विच इज दालचीनी पाउडर ऑल्सो, एंड अ लिटिल बिट ऑफ हनी. That will make the drink edible, and this is how they will also gain some strength. Okay, WPC diet. Okay, P ka protein and C is can anyone tell me what does this C stand for? W is definitely water. Around 4 liters of water are a must. Okay, every single meal must be a protein meal. And now I am just waiting कि C किसके लिए है? What does the C in our WPC COVID diet stand for? Okay, C stands for carbohydrates. जी हाँ, I know आप लोगों को लगता होगा कि ये हमें कोई इम्यूनिटी बूस्टर नहीं बता रही है, ये हमें she is not talking to us about immune boosting foods. Exactly, Renuka is also saying citrus, Swati saying cucumber, and I think Aki Grooves is saying carbs. जी हाँ सोना, it is carbohydrates. Okay, when it comes to micronutrients तो किसी भी प्रकार के आ ही जाएंगे अगर आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ठीक है तो. और इसमें अगर आप प्रोटीन खा रहे हो तो यू विल टेक केयर ऑफ द फैट दैट कम्स इन. बट when it comes to C, the C stands for carbohydrates over here. What does it mean by carbohydrates? I am telling you carbohydrates even if the person is a little overweight, because at this particular time when there is high fever, when there is body pain, generally we are suffering from lack of energy. Lot of energy is out and about. Okay, you are tired, you are listless, you don't want to eat, you don't end up giving your body the required nutrients. So anyone who is suffering from COVID, your best friend is mango, your best friend is banana, your best friend is a roti, your best friend is dahi chawal, your best friend is dal chawal with a little bit of ghee, your best friend is a khichdi. Okay, so when it comes to carbohydrates, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते. Okay, आपके घर में मेक श्योर दैट एटलीस्ट दिन में 2 कटोरी चावल, दही चावल हो, दाल चावल हो या खिचड़ी, दैट हैज टू गो इन द स्टमक ऑफ अ कोविड पॉजिटिव पर्सन. ओके, अगर आपको राइस की टिक्की बनानी है जो आपने थोड़ी सी बेक कर दी, एयर फ्राई कर दी या तवा फ्राई कर दी, दैट इज ऑल्सो परफेक्टली ओके. फ्रूट्स आर अ मस्ट. आई नो सबको लगता है कि फीवर है तो फ्रूट्स की इतनी जरूरत नहीं होगी, बट फ्रूट्स आपको फ्रूक्टोज देंगे विच इज फ्रूट शुगर, जिसकी वजह से आपकी रिकवरी भी थोड़ी बेटर होगी. बिकॉज फ्रूट्स में मैंगो हैज कैरोटीन्स, मैंगो हैज विटामिन सी, वाटरमेलन जो सीजन में है हैज आयरन, हैज अ लॉट ऑफ वाटर.
Right. So when a normal COVID patient is suffering from COVID and there is someone positive, you have to make sure that आप ये सारी चीजें tick off करो. Okay. A quick revision. The diet that a COVID positive patient should follow is a WPC diet. Make sure that the person is having at least 4 liters of water. Make sure the person is having a protein serving in the form of paneer, sprouts, eggs, chicken, cooked in any format at least once in every meal. Make sure the person is eating carbs that come from fruits, carbs that come from natural rice, carbs that come from rotis, because that is going to give the person a lot of strength to combat the disease. Okay, now this was for a normal person. अब अगर मैं आपको बताऊं, how can you plan, a diet for a person who is COVID positive but diabetic? सबसे पहले ये याद रखना है कि when it is a comorbidity, अगर कोई ऑलरेडी एक डिसऑर्डर लेके चल रहे हैं एंड उसमें अगर उनको कोविड हो गया, that is a time when you have to be a little extra cautious. So what I would say or I would recommend is आपको अपनी शुगर मॉनिटरिंग तो भूलनी ही नहीं है. कोविड है, मेंटली फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रिलैक्स. हाफ द बैटल इज वन इन द माइंड. Sometimes there is a fear also that more than the symptoms of COVID, it is the worry that मुझे COVID हो गया, that leads to increased blood pressures, that leads to arrhythmia, which is irregular heartbeats, and that causes a lot of disorders and health complications. Okay, so when somebody is getting a health complication because उनको ये पता चला है कि उनको COVID है, it's not a cool thing to happen, right? So what you can do is you can make sure that first of all you win the battle in the brain. Okay, so सबसे पहले आपको बहुत अच्छे से अपनी ब्रेन को प्रोग्राम करना है that fine. So the first thing, if you're a diabetic and a COVID positive, is you make sure your sugars are in control. You eat your carbohydrates, but the carbohydrates will be the complex carbohydrates, जैसे brown rice, जैसे fresh fruits, but you combine the fruit with another snack. Sprouts are not going to raise your sugars. मकई रोटी, जवार रोटी is not going to raise your sugars. Okay, दही भी आप आराम से खा सकते हो और आपकी डाइट में प्रोटीन आपको देनी ही है. Like for example, we have a query here. My mom is a diabetic and COVID, and she is on medications, is having blisters in her mouth. The first thing she should do is have lots of water. Sana Yusuf, इनको at least दिन में 3 लीटर पानी दीजिए. Given her age, 4 लीटर is the best. And when she's a diabetic, your hands are tied when it comes to juices. But what you can do is घर में आप थोड़ा सा प्लेन ग्रीक योगर्ट लेके आइए, या नॉर्मल प्लेन योगर्ट ऑल्सो इज फाइन. लास्ट रेसिपी मैंने आपको बताई थी, विच इज अ जार लाइक दिस. इन अ जार व्हाट यू शुड डू इज you should fill half of it with fruits. Okay, cold nice mango, papaya. You can, if her sugars are high, you go easy on the mango and you make sure that you add papaya and berries in that. उसके ऊपर आप एक लेयर बनाइए ग्रीक योगर्ट का, और उसके ऊपर आप डालिए सब्जा, या फिर उसे चिया सीड्स, एनीथिंग दैट यू गेट, उसे सोक करिए. यू पुट दैट लाइक जस्ट लाइक यू वुड ईट अ फालूदा, बट दिस इज विदाउट द रू अफ़ज़ा, विदाउट द शुगर्स. दिस आप फ्रिज में रखिए और आप उनको दीजिए. शी विल डेफिनेटली फील वेरी वेरी नाइस. ब्राउन राइस अलॉन्ग विद दही, जिसका आप दही चावल बना के उनको दे दो, दैट ऑल्सो शी इज गोइंग टू लव. थोड़ा सा ठंडा होगा, शी इज गोइंग टू फील नाइस इन हर माउथ. Okay, I hope this helped you. But when it comes to a diabetic, life can get a little complicated, but don't forget that you have to remember that you are going to have to manage your sugar सबसे पहले. Okay, now when it comes to fruits for a diabetic who is COVID and juices, आपको अगर ऐसी कोई सिचुएशन है जहां पे आपको ब्लिस्टर्स आ गए हैं, या जहां पे आपको लिक्विड्स की जरूरत पड़ जाए, then vegetable juices can come to your rescue. You must juice out kakdi, which is cucumber. You must juice out palak. You must juice out any single vegetable that is a good vegetable, good water content wala vegetable. Juice it out and make sure that you refrigerate it. उसके बाद उसमें थोड़ी chia seeds डाल दीजिए. You will feel very nice when you are having that vegetable juice. Okay. Now when I come back to what you are going to do about mango and banana, both of these fruits people feel are very high in sugar. If a diabetic is eating a mango or a banana,
सबसे पहले तो शुगर देख लीजिए, एंड नेवर ईट इट विद लंच और नेवर ईट इट विद डिनर और ब्रेकफास्ट, बिकॉज ऑलरेडी आपने वहां कार्ब्स खा रखे. यू विल ईट इट इन बिटवीन दीज मील्स, यू कैन रेफ्रिजरेट इट, बट जब आप खाते हो ना उसके पहले या तो उस पे 2 स्पून ग्रीक योगर्ट डालिए या तो उसमें 3 बादाम्स डालिए, बिकॉज नट्स आर not very high in sugar and they will help you stabilize the sugar. Okay, so when it comes to a diabetic also, you can easily take care of it by giving a high protein diet, and the juices can be definitely taken care of by making sure veg juices जाते हैं. अगर आपको ब्लड प्रेशर है, ओके, in that case also the first thing you will do is you will make sure that you are managing your pressure पहले. Okay, डॉक्टर को पूछ लीजिए that whether you have to continue those tablets, you don't have to continue those tablets, and make sure that you are adding a lot of potassium rich food in your diet. जी हाँ, coconut water, buttermilk, water and mango, banana, watermelon, these are potassium rich foods which also are rich in vitamin C and will also make sure that you are on the right track when it comes to recovery. Okay, so अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो प्लीज आप हाई पोटेशियम फूड वाली एक डाइट खाइए and you will recover very well. Make sure you are resting also and you are then going to be good to go. Now I think I will take some questions. What is the difference between sabja and chia seeds? Sabja is Indian. Sabja is not very high on calorie. I think sabja is not very high on, how can I explain it to you? Sabja is not high on protein. Sabja is, I think I have gone away on Facebook. Yeah, I think we are back. Okay. Yes. सब्जा जो है वो एक इंडियन सीड है. सब्जा इज नॉट हाई ऑन प्रोटीन. सब्जा इज जस्ट अ कूलेंट एंड इट इज चीपर. Chia seeds on the other hand are not Indian, they are African and they are very high in omega-3 and protein, इसलिए they are little expensive. Okay, मैंने बीपी के लिए अभी डाइट दे दी. Can milk be consumed when a person is COVID positive? 100%. If your milk source is renowned, if you know that milk इनका अच्छा है, yes, you can go ahead. Make sure that you're boiling it, removing the cream, and you can easily do it. Okay, then we have milk with almonds and saffron. जी हाँ, you can have milk with almonds and saffron. Okay, still my taste and smell has not come back after 20 days. Rashi, let's stick around. Let's make sure that you're eating healthy. Let's make sure your protein is in proper condition. Liquids पीजिए, पानी पीजिए, and make sure that you recover very well. Chest congestion and cough है तो कर्ड और सब्जा ले सकते हैं क्या? Yes, Sana, if they have any chest congestion, chia seeds and sabja or dahi is not going to come in the way. In fact, it is rich in probiotics, dahi. And chia seeds being high in protein and being high in omega-3, it will only help the situation and not harm the situation. Right, guys? कोविड पॉजिटिव की डाइट तो मैंने आपको बता दी, बट इफ यू आर समवन हु इज स्टेइंग अराउंड अ कोविड पॉजिटिव एंड इफ योर चांसेस ऑफ गेटिंग कोविड आर अ लिटिल हाई, आपकी डाइट भी हमेशा की तरह टिप टॉप होनी चाहिए. यू मेक श्योर दैट यू आर नॉट जंकिंग अप, प्लीज गाइज. एंड इफ यू आर समबडी हु इज नॉट गॉट कोविड, बट अगर आपको डायबिटीज है, इफ यू आर हाइपरटेंसिव, please take care of yourself. Don't eat anything which is packaged. Don't eat anything. Erratic timings is something that is really disturbing the cycles of even our clients. Make sure that आप regularity रखो life में, थोड़ा patience रखो, be happy over here. And if at all there is any time that you can start taking care of your health, it is now. तो अगर आप डायबिटिक हो, हाइपरटेंसिव हो, अगर आप हार्मोनल इम्बैलेंसेस वाले हो, अगर आप थायराइड वाले हो, अगर आप ओवरवेट हो, what are you waiting for? In fact, कभी कभी लगता है कि this wave is longer only to wake you all up, कि अभी तो डाइट कर लो, है ना? So what I am going to do is I am going to now also tell you that for the existing clients of Balanced Nutrition, what we have done is हम लोग आप लोगों के लिए एक एक्टिविटी लेके आए हैं, and that is अपना वेस्ट हिप रेशियो कैलकुलेट करने की. So anyone who is a client at Balanced Nutrition and was a client at Balanced Nutrition, आप लोगों को एक एक्टिविटी है which your mentor is going to talk about tomorrow. And अगर आपका वेस्ट हिप रेशियो 0.8 के ऊपर आया, which is not a good sign, we are going to push you further by giving you a voucher of ₹1,000. Yes, it is a punishment / gift from us
to make sure that you are coming back on track. For all those who are not our clients, आप लोगों को एक चीज करनी है, okay? And वो है हमारा health score लेना है. You have to tell us what is your weight, what is your height, and fill out a little details. I'm going to tell my team to attach links over here, okay? वो वाले जो links है, वो link पे click कीजिए, एक हेल्थ स्कोर लीजिए, आपको पता चलेगा आप ओवरवेट हो, कितने ओवरवेट हो, आपका आइडियल बॉडी वेट क्या है. यू नो, द हेवियर योर वेट, द हेवियर द डिस्काउंट यू गेट. बिलीव इट और नॉट, इवन आपके लिए 1000 रुपी वाउचर वेट कर रहा है जो आप एग्जिस्टिंग डिस्काउंट्स के ऊपर यूज कर सकते हो, बट आप लोगों को उसके लिए लेना पड़ेगा हेल्थ स्कोर. और अपने मेंटर्स को आप कल से पूछिए, दोज हु आर आवर क्लाइंट्स, व्हाट इज माय वेस्ट हिप रेशियो. द मेंटर विल स्टार्ट कैलकुलेटिंग इट एंड गिविंग इट टू यू. ओके गाइज, this is a small little activity for the clients to stay on track and for all our followers who are not our clients to become our clients. And it's high time guys, abhi to diet pe dhyan de do because that is the only thing right now you can focus on. Gyms are shut, swimming pools are shut, physical activity is limited, so the best thing to do right now is get on this diet plan and at least stay nice and healthy. What about those who don't have COVID? What should we eat? What should we avoid? You mentioned in the beginning that you would share that also. जी हाँ, I thought you all get bored of me. लेकिन अगर आपको चाहिए तो मैं आप लोगों को एक बहुत 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 3-pointer डाइट दे सकती हूँ. And there is something that is come for kids also. The first thing I would say is that यार kids की बिस्किट बंद करो. देखो लिंक आ गया है हेल्थ स्कोर का ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम पे जरूर आएगा एंड इट विल कम वेरी फास्ट. प्लीज मेक श्योर, उसको पिन भी कर रखा है हमने, प्लीज मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग दैट हेल्थ स्कोर. ओके, अच्छा चलो आप लोग बोर नहीं हुए हो. आई हैव बीन टोल्ड मेरे वीडियोस छोटे होने चाहिए, यू नो, आप लोग वीडियोस लंबे करते जाते हो बाय आस्किंग क्वेश्चंस. आई एम नॉट, मेरी सोशल मीडिया टीम शुड रियलाइज दिस. ठीक है, ओके. सो व्हेन इट कम्स फॉर इम्यूनिटी फॉर किड्स, यार पहली चीज तो ना बिस्किट बंद करो बच्चों की प्लीज, और पैकेज फूड जितना कम दे सको उतना प्लीज 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 प्लीज. Please make sure that your kids are not eating out of a packet. I know it gets boring. I know it is a testing time. But then these kids will grow up to have hypertension and diabetes and weight issues. And that time they will be the ones who will, you know, you all are so focused कि नहीं बच्चे का ऑनलाइन स्कूल है, बच्चे का ऑनलाइन क्लास है, बट बच्चे की diet. Okay, so nothing to give for immunity if you are giving too many biscuits, if you are giving too many tetra packs of juices. बच्चे को फ्रेंडशिप कराओ कोकोनट वाटर के साथ, बच्चे को फ्रेंडशिप कराओ मैंगो के साथ as it is. You know what, cut the mango pieces and refrigerate them and give them that. They will enjoy that. Okay, mango pieces को इसमें अगर suppose I put mango pieces, then I put some coconut water in it, इसको मैं freeze कर दूँ and I will tell my kid that this is Pepsi, this is Pepsi. वो छोटी छोटी पेप्सी नहीं खाते थे हम. That is how we become creative and we make sure. अच्छा cold, I am not somebody who believes that ice खा के सर्दी होती है, ice खा के कोविड होता है. Okay, it is no science that says if you eat something very cold you get a cold. Okay, it is your immunity and it is a virus. Okay, right. Omkar, Archana, what to ask mentor? Mentor will tell you tomorrow. Chat पढ़ लेना mentor की, ठीक है. So when it comes to kids, no junk. Make sure they are eating natural. Make sure they eat 1 banana a day at least. Make sure they are having 1 cup of turmeric milk at least, and they are eating fresh घर का खाना. I know मेरे यहाँ भी maid used to travel and come, but अभी वो नहीं आने वाली है. So I'm gonna be the one cooking, and it is going to be innovative. I'll try and send you pictures of what I have cooked. Okay. So अगर आपके घर में बच्चू है तो you can use those recipes as well. And when it comes to the adults, okay, एज एन अडल्ट आप लोगों को सिर्फ इतना ध्यान देना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हैव अ वेकिंग अप एंड अ स्लीपिंग साइकिल. ओके, जिस दिन आप लेट सोते हो और आप लेट उठते हो या आपकी पूरी साइकिल खराब हो जाती है, आपको सिर्फ एक ही चीज करनी है. यू हैव टू एंश्योर दैट यू डू नॉट डू दिस बिकॉज उसकी कॉम्प्रोमाइज ऑन योर हॉर्मोन्स इज ट्रेमेंडस. उसकी compromise on your entire health and immunity is tremendous. So what you should do is you should just make sure that you are first of all having a timetable to sleep and you are having a timetable to wake up. Second is that breakfast and lunch you cannot miss. Okay, don't say breakfast में चाय पी के बैठ गए. पोहा तो पोहा, whatever you eat, but you make sure you're eating a breakfast and you're eating a decent lunch.
in that lunch you make sure that you're eating some form of protein or the other. It should not be roti sabzi. If you're having dahi, have a good bowl of dahi. If you're having a raita out of it, please do so. But एक प्रोटीन तो आपको होनी ही है. शाम को आपको एक फ्रूट खाना है, no matter what. Okay, and आपका डिनर है ना, it could either have a soup or a salad. This is how you will take care of yourself. As I said, WPC ये आप पे भी लागू होता है, but you are a little wider in terms of choice. Okay. Now I think I have answered all your questions. Instagram पे भी health score आ चुका है guys. Make sure you all are taking the health score if you are not a client with us, and you have to get on a diet plan, because as I said, there is no gym, there is no activity, no recreation is open, and you are eating more than what you were with your gym. Just imagine, खाते ज्यादा हो, खर्च नहीं करते, तो क्या हो जाएगा? You will swell up, right? And once you swell up, you have obesity. Once you swell up, you have diabetes. Once you swell up, you have hypertension. This is going to make you more prone to getting COVID. So staying away from COVID means being in good shape, making sure your timetable is excellent, and making sure that you are not eating so much that after a few months you might have to go for a blood sugar test or a blood pressure test. Okay. With that, I am going to sign off, and I will wait for all of you to share this video as much as possible, because it has relevant corona information and it is going to help millions of people. Bye bye. Take care.